रिलेशनशिप्स की बात करेंगे आज। मैं हूं विवेक आत्रे and I'll be talking in English and Hindi. Let's talk about relationships. Very important aspect of human life. In fact, so important that we cannot survive without relationships. What happens in relationships? We are often in a happy relationship and often in a not so happy relationship. These relationships need not be romantic only. They can be and they are with parents, with children, with brother, sister, with friends, with officials, with colleagues, with bosses, with juniors. So there are so many relationships that survive and exist and subsist in our lives. होता क्या है, छोटी सी बात पे बिगड़ जाती है। इवन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो जाती है, पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, and that often leads to a big difference of opinion. So what do we need to do? Three things. Number one, three things में से number one, we need to be patient, understanding, accepting. We need to have tolerance. We need to be aware कि कोई perfect नहीं होता है. Nobody in the world is perfect. So what happens is that if we expect too much from a relationship, then there becomes a problem. So if we think that this person is going to be, जिसको बोलते हैं the cat's whiskers, he's Superman, physically, mentally, spiritually perfect, not possible. हर एक की weaknesses होती है। कुछ साल बाद जो बड़ा हैंडसम ब्रैड पिट टाइप बंदा था वो नॉट सो हैंडसम लगने लग जाता है। जो ब्यूटीफुल लेडी थी वो नॉट सो ब्यूटीफुल हो जाती है। लेकिन जो फ्रेंडशिप है रिलेशनशिप में, इवन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इवन इन अ मैरिज रिलेशनशिप, that friendship can grow and the understanding grows. So what happens is after many years of being married, you can actually sense what the other person is thinking. और फिर क्या होता है कि बिना कहे भी कई बातें समझ आ जाती हैं। तो जो तुमने कहा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो तुमने महसूस किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी का मूड ख़राब है, कोई आज दुखी है, तो हमें पता चल जाता है क्योंकि वो हमारा अपना है, हम उसको सेंस कर लेते हैं। But then we need to do something about it. We need to help that person by being a little more tolerant, a little more patient. What we normally do is to take our own for granted, and we are very good with others. आज मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी आया हुआ, बैकड्रॉप भी शूलिनी यूनिवर्सिटी का इमेज है यहाँ पे सोलन में, हिल्स में। तो क्या होता है कि हिमाचल इज़ अ वेरी कूल प्लेस, बट इवन हियर and in the whole of India, we often take our own people for granted, and we are very good with others. दूसरों के साथ हम बहुत अच्छे हैं, अपने बॉसेस के साथ, अपने दूसरों के साथ, एक्सटर्नल लोगों के साथ। कोई फॉरेनर आ जाएगा तो हम बहुत अच्छे हैं उसके साथ, लेकिन क्या हम अपनों के साथ अच्छे हो सकते हैं? कैन वी नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड? ठीक है, कभी कभी हम मूडी होते हैं, वी कैन नॉट रिमेन perfect all the time. As I said, nobody's perfect. But can we be a little more understanding? Let's take the example of, let's say you have neighbors. उन दोनों हस्बैंड वाइफ की कई बार मान लो एक दूसरे पे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लगता है वो मुस्कुराते हुए भी नज़र आते हैं। कभी कभी लड़ते हैं, कभी कभी लड़ना कॉमन है, लेकिन लड़ाई किसी एक लिमिट के होनी चाहिए। तो मैं किसी बड़े सीनियर कपल को मैं इंटरव्यू कर रहा था अपने गुड वाइब शो में, एंड दे सेड दैट वी डू नॉट कैरी ऑन एनी आर्ग्यूमेंट बियॉन्ड 15 मिनट्स, अलार्म लगा के ऑलमोस्ट, and especially when we are going to sleep at night, we forget the argument. We don't carry it on to the next day. I think it's a great policy. And people who have been together for 50 years, 60 years, they know. They have somehow come to accept each other as they are. And then love and understanding grow. So love is the key. Even in two friends who are not romantically involved, two guys, two girls, whatever, they also, there is a certain amount of love, tolerance, understanding, patience. अगर हम बहुत ज़्यादा टेकी हैं, बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, देन वी डोंट इवन लुक एट समवन व्हाइल टॉकिंग. व्हेन वी हैव अ गुड रिलेशनशिप, वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड अ गुड लिसनर. अगर हम सुन रहे हैं तो हम दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं, उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. और अगर हम नहीं सुन रहे हैं उसकी बात, हम इधर उधर देख के बात कर रहे हैं, हो जाता है हस्बैंड वाइफ में भी, तो क्या हम उसको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं? और फिर वही बात दोबारा दोबारा होती है तो आपको लगता है कि ये तो रूटीन की बात है. सो वी आर नॉट एज केयरफुल विद आवर ओन पीपल एज वी आर विद अदर्स एंड न्यू पीपल. सो वी नीड टू बी, relationships matter. Relationships are a matter of
एक्सेप्टेंस. अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो और अच्छी रिलेशनशिप्स रहती हैं हमारी. It is said that bosses who meditate are better CEOs, and if they can be better CEOs, they're better at home also. Of course, the richest men in the world are not good at relationships. ये तो पता चल गया है हमें. बिल गेट्स, जेफ बीजोस, बात नहीं बन रही उनकी पर्सनल लाइफ में. तो एलॉन मस्क भी शायद. तो हमें नहीं पता कि कैसे वो गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं. उसका कोई लिंक है विद पावर, मनी एंड फेम? नो. The poorest of the poor may be very calm and cool and good in relationships. And what about relationships at work, which matter? Your clients. If you are going to be jumpy, not available, the client will get upset. So client relationships also matter. Work relationships matter. Patience is the key. Understanding is the key. कोई नया बंदा आया आपके ऑफिस में, कोई new person has joined. Can you make them comfortable instead of making it difficult for them and being rude and crude and being a prude? It's not good. So let's try and maintain all-round relationships which are positive, cheerful, understanding, and कभी कभी हम दुखी भी हो गए तो कोई बात नहीं. 5-10% of the time we can be. It's okay to be a little moody at times, but not too much, and not make a habit of it. Not being a rondu type. That's my favorite line. कई बार आपने सुना है मुझे ये बोलते हुए. तो आज इतना ही. कूल क्लाइम्स ऑफ हिमाचल से मैं बोल रहा हूँ आज, और जल्दी ही आपकी सिटी में भी आ रहा हूँ टू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप्स, लीडरशिप, बैलेंस, कामनेस, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. और वीडियोस देखते रहिए. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, एंड लेट्स कीप स्माइलिंग एंड मेंटेन गुड relationships with each other and with others. See you soon.